Herbicide resistance in commercial plants. Now, in previous topics, we have focused that how gene manipulation can be used to produce some biomolecules that may have medicinal importance or their use in pharmaceuticals. Now here a few topics we are going to focus that how some important agronomic traits that is having agricultural importance with reference to plants, how they can be managed. As I told you in various topics that naturally plants they have the ability to produce variety of metabolites and even food products, and human have tried to improve the traits of the plants for their own benefit, and they have used conventional breeding techniques, but they have certain limitations. But with the help of gene manipulation techniques, now we can manage the transfer of beneficial genes into different type of living organisms, and even when the sexual incompatibility is there, कि अगर जो plants हैं अगर वो क्लोजली रिलेटेड ना भी हों तो फिर भी हम एक का जीन लेके दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जीन्स कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म to the recipient organism so that beneficial traits may be incorporated. And here we are now going to focus on the herbicide resistance and its importance. So herbicides, they are the different type of chemicals that can be used to control the growth of herbs in the economically important crops. कि कुछ ऐसी वीड्स हैं जो कि वीट के अंदर ग्रो करती हैं या पोटैटो फील्ड के अंदर ग्रो करती हैं या किसी और एग्रोनॉमिक क्रॉप के अंदर ग्रो करती हैं, तो उन वीट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है. तो इस पर्पस के लिए हर्बिसाइड जो हैं वो यूज़ की जाती हैं जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको किल कर सकें. एंड हियर यू मे हैव द आइडिया that sometime herbicides they may be non-selective, that in addition to herbs they can also damage our crop as well. So this is one of the disadvantage. To overcome this problem, we have to take into consideration that we should select only those herbicides that are highly selective in their action, that they should kill only the weeds, not our commercial plants, but it is a difficult task. So an alternative way to manage this problem is that to increase the selectivity of the plants against a variety of herbicides, कि हम इस तरह से मैनेज करें कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें, कि वैरायटी ऑफ हर्बिसाइड्स अगर यूज़ हों तो हमारा जो कमर्शियल प्लांट है लाइक वीट है, पोटैटो है, राइस है, तो वो उन ज़्यादातर जो हर्बिसाइड हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करें. एंड इट कैन बी मैनेज्ड बाय मैनिपुलेटिंग द बायोकेमिकल pathway of the plants. So in this way plants may be able to exhibit high tolerance against the herbicides, and even they also have the ability to detoxify them, कि उनके जो harmful impacts हैं उनको plant जो हैं वो ख़त्म भी कर सकते हैं by degrading the herbicide. And here I can quote the example of herbicide like the glyphosate. तो glyphosate एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि प्लांट में एक ख़ास किस्म का एंजाइम होता है जिसको EPSP कहते हैं, तो उसको जाके ये इनहिबिट करता है. EPSP सिंथेस जो है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की बायोसिंथेसिस को ये रेगुलेट करता है. तो अब ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे हम EPSP सिंथेस जो है इसको ओवर एक्सप्रेस करवा सकते हैं, ताकि अगर
ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड यूज़ भी की जाए तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की जो जो एक्सप्रेशन है उस पर ज़्यादा असर ना पड़े. Now, different type of commercial companies they have started the marketing of glyphosate resistant crops like maize, cotton, etc.